This topic is calculation of coefficient of variation in discrete series. Calculation of coefficient of variation in discrete series. Illustration. Calculate coefficient of variation in the following data. Items and frequency. Items are 10, 12, 14, 16, के बाद 18, 20 and 22. फ्रीक्वेंसी जो है हमारी 4, 6, 10, 15, 9, 4 and 2. Now we will go to solution part. We have to recall that we have to calculate mean, then standard deviation, and then there is coefficient of variation. We will write our first column items, frequency, deviation from assumed average. That is dx is equal to x minus a. This is our third column. Now fourth column is f dx. Fifth column is f dx square. Items are 10, 12, 14, 16, 18, 20 and 22. Respective frequencies are 4, 6, 10, 15, 9, 4 and 2. यहीं पर हमने पहला कदम जो है हमारा वो मीन निकालना है, लिहाजा हमने इसका सबमिशन करना है n इज इक्वल टू it is sum is 50. The number n जो है it is equal to 50. now हमने assumed mean लेना है. assumed mean हम तस्वीर करते हैं, हम ले रहे हैं 16 को. that is dx is equal to x, that is 4,
x जो है it is 10, a is 16, therefore dx जो है हमारा है deviation of x वो -6 है when a is equal to 16 जो हमने लिया -6 -4 -2 16 - 16 0 18 - 16 2 20 - 16 4 22 - 16 it is 6. now f dx f को dx से ज़रब करना है 4 6 are 24 -24 4 6 are 24 again -24 2 10 are 20 -20 15 zeros are 0 2 9s are 18 4 4s are 16 6 2s are 12. f dx को सबमिशन करना है सबमिशन ऑफ f dx क्योंकि ये माइनस कॉलम में आता है और ये प्लस कॉलम में आता है इनका अलग जमा करेंगे 4 4 8 2 2 4 4 2 6 -68 8 6 17 it is 46. therefore minus f dx is equal to 8 -22 -22. now f dx square minus and minus plus 6 4s are 6 का 2 बाजी 14 144 4 के 16 9 2 22 40 0 0 18 क्षेत्र 16 और 4 64 12 और 6 72. अब इसका सबमिशन करना है सबमिशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 452. now we will apply the अब हमने मीन निकालना है मीन इज इक्वल टू ए एज्यूम्ड मीन प्लस सबमिशन ऑफ एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन दिस इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन जो है इट इज 16 प्लस सबमिशन ऑफ एफ डी एक्स इट इज -22 डिवाइडेड बाई एन इट इज 50. -22 को 50 से तकसीम करने पर ये जो हमें आएगा इसका वैल्यू इट इज़ 15.56. मीन जो निकला इट इज़ 15.56 एक पार्ट पहला पार्ट. दूसरा पार्ट हमने स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन देखना है सिग्मा इज इक्वल टू रूट ऑफ सबमिशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सबमिशन ऑफ एफ डी एक्स डिवाइड बाई एन होल स्क्वायर. अब हमने ये वैल्यूज़ लगाने हैं सबमिशन ऑफ एफ डी रूट ऑफ सबमिशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर इट इज़ 452 divided by n it is 50 minus summation of f dx it is -22 divided by n it is 50 whole square. इनको तकसीम करेंगे 452 को 50 पर तकसीम करने पर 9.04 आता है माइनस इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे इट इज़ इक्वल टू -0.44 स्क्वायर. अगेन ये गस यहाँ पर 9.04 माइनस अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे
0.44 को into 0.44 and we will see that the sum is equal to 0.1936। माइनस और माइनस प्लस बन जाते हैं और माइनस की निशानी बाहर आएगी। सो अब इनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। इट इज़ 8.8464। अब हम इसका रूट निकालते हैं। रूट वैल्यू जो है इसका वो है 2.97। नाउ वी विल गो टू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और अब तीसरा पार्ट। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन is always equal to divided by x bar into 100 CV, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। स्टैंडर्ड डिवीएशन जो है हमारा इट इज़ 2.97 डिवाइडेड बाई मीन। मीन जो है इट इज़ 15.56 into 100। इसको तकसीम करेंगे, ज़र्ब करेंगे। इट इज़ divided by 15.56, it will is equal to now 19.09। therefore coefficient of variation is equal to 19.09। ये इसका आंसर है। इंशाल्लाह कल हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखेंगे कि कैसे निकालते हैं।